We are very close to the launch, and let me quickly run you through the flight events. About the nominal flight timelines for the PSLV-C58 XproSat mission. At T0, which is scheduled at 9 hours 10 minutes, the first stage PS1 ignites and followed by the ignition of the two strap-on motors 400 milliseconds later. The strap-ons continue to burn for 70 seconds, after which they are separated from the ongoing launch vehicle. The PS1 stage, that is the core S139, separates 109 seconds into the flight. By this time, the launch vehicle would have gained an altitude of 57 kilometers and acquired a relative velocity of 1.6 kilometers per second. All subs sound. The stage 2 ignites All sequences after sound. PS1, continues to burn for 152 seconds. Operational time for PS3 is 124 seconds. VHPP open. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be achieved. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15 seconds. प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift Plus off 5 normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV-C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. Due to tracking. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन Plus 20 seconds. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV-C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य. Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा. तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा. SHAR tracking station currently tracking the flight. Ground lid strap-on separated. दोनों स्ट्रेपॉन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है. Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन. First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है. प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है. There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है. इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है. Plus 3 इसकी minutes. पुष्टि हो चुकी है. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है. Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV.
द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ SHAR tracking station continues to track. Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई वर्तमान में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। SHAR and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात ही Combined hosting for approximately 200 seconds. To coast for another 400 seconds. During the coasting phase of flight, the relative velocity reduces from 7.2 kilometers per second to 6.7 kilometers per second, and as a result, close to 400 kilometers increase will be observed in the altitude. XproSat विभिन्न खगोलीय विकिरण उत्सर्जन स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगा, नाभिक, पल्सर पवन, निहारिका आदि से उत्सर्जित उत्पन्न जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इसे समझना खगोलविदों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। एक्सरे पोलैरिमीटर हमारी समझ में दो और आयाम जोड़ेंगे। यह है ध्रुवीकरण की मात्रा तथा ध्रुवीकरण का कोण और इस तरह यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने में उत्कृष्ट निदान उपकरण साबित होंगे। XproSat द्वारा भारतीय विज्ञान समुदाय की राह पर यह एक प्रमुख अनुसंधान की दिशा है। XproSat में दो मुख्य वैज्ञानिक निदभार हैं जिनका नाम है पॉलिक्स और एक्सस्पेक्ट। ये सफर कर रहे हैं। इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोयम 3 का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV-C58 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV-C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे। Third stage separated.
जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। Vehicle in separated hosting for approximately 425 seconds. Plus 10 minutes. तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात चतुर्थ चरण के प्रज्वलन में अभी समय है और इस दौरान PS4 का कोस्टिंग फेज जारी है। यह करीब 400 सेकंड तक जारी रहेगा। The PS4 is currently not operational, though it is in the coasting phase, which will continue for 425 seconds in all. Vehicle performance normal. The PS4 stage, when it ignites, will continue to burn for 247.5 seconds. Thereafter, the injection parameters of the spacecraft XproSat will be achieved. After injection of the primary satellite, PS4 has yet another milestone to accomplish. It lowers to an orbit of 350 kilometers. After XproSat injection, this orbit will be at 9.6 degrees inclination, which is achieved through 2 restarts. These maneuvers are expected to take 83 minutes from the XproSat injection. Once in the new orbit, PS4 will be subjected to passivation by venting remnant propellants and depressurizing the stage tanks. Thereafter, the control of stage is transferred to POEM avionics. Vehicle performance normal. There are 10 payloads in POEM, 7 of which are finalized through in space. Speaking about the payloads that Plus 12 minutes. POEM carries, Radiation Shielding Experiments Module (RSEM) is designed by a firm called Take Me to Space for evaluation of effectiveness of tantalum coating. The second payload, Women Engineered Satellite or VSAT for solar irradiance and UV index from LBS Institute of Technology for Women. Third payload is an amateur radio satellite, BeliefSat-O from KJ Somaya Institute of Technology. Fourth payload is again a CubeSat called Green Impulse Transmitter from Inspacity Space Labs Private Limited. LEAP TD from Dhruva Space Private Limited to demonstrate subsystems for microsatellite. 2 payloads are there from Peletrix Aerospace Private Limited, which are named Rudra 0.3 HPGP and Arca 200. 3 more payloads are from ISRO. The one from Physical Research Laboratory is called the Dust Experiment. 2 more from Vikram Sarabhai Space Center. One will be called as Fuel Cell Power System and the other is silicon-based high energy cells. These are the payloads from ISRO. जहां भारत में सभी नववर्ष के स्वागत के लिए जश्न और मनोरंजन में लगे हुए थे, वहीं इसरो के वैज्ञानिक PSLV-C58 प्रमोशन की तैयारियों में जुटे हुए थे। इनकी गतिविधियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। सफल मिशन के ध्येय से सराबोर इसरो के वैज्ञानिक इस वर्ष का आरंभ खगोलीय समझ को और बढ़ाने के उद्देश्य से PSLV-C58 के प्रमोशन में कार्यरत हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 516 किलोमीटर, XproSat की अंतक्षेपण की कक्षा 650 किलोमीटर के करीब होगी। वर्तमान में सापेक्ष गति 6.86 किलोमीटर प्रति सेकंड। 40 चमकीले खगोलीय स्रोतों का प्रेक्षण करने की अपेक्षा है। यह मध्यम एक्सरे ऊर्जा बैंड का पहला नेत्रभार है जो ध्रुवण मापन के लिए समर्पित है। इसके अलावा एक और नेत्रभार एक्सस्पेक्ट
एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग निर्धार है जो एक्सपोसैट में जा रहा है। यह सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम में त्वरित समय तथा संवर्धित स्पेक्ट्रम विभेदन प्रदान करेगा। यह पॉलिक्स का डेटा को इस्तेमाल करते हुए निरंतर उत्सर्जन में वर्णक्रमीय स्थिति परिवर्तन, लाइन फ्लक्स और प्रोफाइल में परिवर्तन, 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रेंज में उत्सर्जन की लंबी अवधि में निगरानी कर सकता है। व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल। इसमें कोलिमीटर का उपयोग पृष्ठभूमि को कम करने के लिए एक्सेस स्पेक्ट के दृश्य क्षेत्र को कम किया गया है। एक्सेस स्पेक्ट विभिन्न स्रोतों जैसे एक्सरे, पल्सर, ब्लैक होल, लो मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रॉन स्टार और मैग्नेटार्स आदि खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण कर सकेगा। कोस्टिंग फेज समाप्ति की ओर। Stage engine started. There's a confirmation that the fourth stage has commenced its operation. We are Plus 17 minutes. 17 minutes into the launch. Current altitude is 606 kilometers. Fourth stage performance normal. चतुर्थ चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित इंजन है, MMH और मॉन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए यह 14.66 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें ऐसे 2 इंजन लगे हुए हैं। वर्तमान The fourth stage is based on liquid propellant. The propellant loading is 1.6 tons. The fuel is monomethyl Plus hydrazine 18 minutes. and oxidizer is mixed oxides of nitrogen. Presently, Fourth the stage tracking performance stations normal. at Brunei and Bayak are tracking the launch vehicle. चतुर्थ चरण को PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के रूप में भी इस्तेमाल। चतुर्थ चरण को निर्धारित रूप से बंद कर दिया गया है। Satellite injection conditions are achieved. Eagerly awaiting the next event. उचित अभिवृत्ति प्राप्त करते हुए यान तत्पश्चात एक्सपोसैट को अंतक्षेपित किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य के प्राप्त होने के पश्चात प्रयोगात्मक क्रिया जारी रहेगी। XproSat satellite separated. And there is a confirmation that the XproSat satellite has been separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन This is डायरेक्टर Range द्वारा। Operation Director. एक्सपोसैट को PSLV-C58 सफलतापूर्वक mission अंतक्षेपित accomplished कर with दिया respect गया to है। satellite separation. But mission is continuing for PS4 orbit platform experiment, that is POEM-3, with 2 phases of 4-stage restart. After 2 phases of restart, PS4 stage orbit will be changed to 350 km circular. The first phase for PS4 restart happens in non-visibility period. The second phase of PS4 restart takes place in the visibility period of Trivandrum in orbit 2. During the non-availability period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. The non-visibility period is approximately 4,500 seconds. All the stations involved in operation shall continue in positions. Handing over to Mission Director. आपने ऑनबोर्ड